Assalamu alaikum. Welcome back to Debrief. Today we have Sarmad Ahsan over here. Assalamu alaikum. Walaikum salam Sarmad bhai. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? I am good, alhamdulillah. And the other guest is Arooj, Abrar. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Walaikum salam. I'm good. So let's move on to discussing the comments. पहले ये बताएं, आप लोगों ने मैच देखा था कल? थोड़ा सा नहीं, मैं तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था. मैं थोड़ा सा पाकिस्तान देखा नहीं है तो फ़ायदा नहीं है. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब नहीं, क्योंकि मैं असल में क्रिकेट नहीं फॉलो करता. ठीक है, तो आप पाकिस्तान की वजह से फॉलो कर रहे हाँ, पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, लाइक ओह अच्छा लोग मैं इट गेट एक्साइटेड है, सो आई एम गोना वॉच इट. बट जब नहीं है तो मैं लाइक so that you can have a conversation with someone. not just conversation, it's very festive in Pak. Obviously cricket is very festive in Pakistan, तो वो अच्छा लगता है कि when you're involved in that festivities, and I'm a huge fan of festivities कि होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए. Yeah. तो इस वजह से I get involved when पाकिस्तान का मैच होता है, वरना तो नहीं. वरना इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर. नहीं, वरना ऐसा इंटरेस्ट नहीं मेरा. मेरे साथ भी यही हुआ था, बट आई वाज लाइक आई वांट टू सी दैट मोमेंट जब कि वो कोई भी टीम्स दोनों में से मैच जीतेगा और वो स्माइल्स, द जेन्युइन पैशन होता है ना उस टाइम के, वी हैव वॉन. तो सिर्फ मैंने उस टाइम के लिए देखा और कुछ ओवर्स देखे थे, लास्ट ओवर्स के, यार कौन जीत रहा है. Right. So do you have the comments open? ऐसा चीज़ वही क्रिकेट पे एक कमेंट्री है, कुछ बोल रहे थे कि एक इंडियन कमेंट आई थिंक स्वास्तिक पांडे कि आप इट वाज द टॉस, यू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट. आई डोंट नो, उनकी कोई वो है, मुझे इतनी nitty-gritties नहीं पता. Basically, what he's saying that if you win the toss, you bowl first because it's easier to chase. Because आखिरी के अंदर the second innings उसके अंदर dew आ जाता है, तो the ball doesn't swing that much. Yeah. So Okay. that's why the dew factor plays a huge part and huge role So in if it. this is a thing, तो Yeah. why doesn't the management like take that into account कि किसी तरह minimize किया जाए इस चीज़ को? के dew factor को किस हाँ, तरह से minimize कुछ फिर तो किया? ये unfair disadvantage होगा ना to anybody who's losing the toss. These are the things na, that natural things like these plays a huge role in क्या कहते हैं cricket because क्योंकि जब पिच बनी हुई होती है, many can say that there were small grasses on the pitch, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है स्विंग के अंदर. और दुबई की पिचेस ऐसी होती हैं कि it does not swing that much on it. So when Shaheen Shah Afridi was bowling and it was swinging a lot, so people were really praising for his spell because of it. लेकिन if you remember जो आखिरी के ओवर करवाया था शाहीन शाह अफरीदी ने, इसमें जो 3 छक्के खाए थे, that was because के वो ड्यू फैक्टर इतना इंक्रीज हो चुका that even शाहीन शाह अफरीदी was not able to swing their ball that much. तो उसकी वजह से it played a huge role. There is another comment by Himayat Khan. Please make a video on COP26 and Pakistan's role in SDGs achievements and future pledges. तो उसके ऊपर हम लोग क्लाइमेट चेंज की कुछ वीडियोस हमारी लाइंड अप हुई हुई हैं, तो उसके ऊपर हमने इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की हुई है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. पहले में हमारा क्लाइमेट चेंज पे है ये. पहले भी मैं कोई 2-3 मतलब बोल चुका हूँ क्लाइमेट चेंज का है पाइपलाइन में. या तो उसके ऊपर सारी डिस्कशन हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर की हुई है. Yeah, and our regular content viewer Jam has congratulated us on Who is this Jam, by the way? What is his story? he's basically an Indian who has been following Debrief since the very start, and he has congratulated us on passing a milestone of 10K subscribers on Pakistan now. Thank you, Jam. Thank you. So yeah, Pakistan. There's another comment that says Pakistan should have lost against Scotland intentionally because I believe कि पाकिस्तानियों की माइंडसेट ये होता है कि कहते हैं कि we have been winning so many matches. हम लोगों का ना मोरल ना बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, so ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम लोग. तो अगर हम लोग एक मैच हार जाते हैं तो हम लोग आगे वाले मैच के लिए प्रिपेयर होते हैं, ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर होते हैं. बट आई बिलीव कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. पाकिस्तान प्लेड really well in the semi-finals, so I don't believe कि anything more could have made it better. Speaking of playing really well, I didn't watch the match. Achha, we're gonna move to our first story, which is the match. Which is the match actually. So I didn't watch the match, but I saw the score. So like देखो तो सही कौन जीता क्या हारा है. The score was very close. Yes. Extremely close. Yeah. Do you know that we could have crossed easily over 180 to 200, just so you know, because हम लोगों ने स्टार्ट बहुत बेहतरीन लिया था, बट इन द मिडल ओवर्स द अदर साइड प्लेड रियली वेल, जिसकी वजह से दे रिस्ट्रिक्टेड अस टू लेस देन 180. बट because the predictor, जो स्कोर प्रेडिक्टर होता है, it was predicting around
196 or 192 when it was around 8 overs, but then they restricted us to less than 170, so 180. So it was a huge play, but Fakhar Zaman played an inspiring innings at the end because Stark was bowling really well, but yeah. बट कल स्टार्क को बहुत ज़्यादा रन्स पड़े. स्टार्क का वही बात है ना, द बॉल वाज नॉट स्विंगिंग इन द एंड एंड दैट्स व्हाई इट प्लेड अ ह्यूज रोल. बट वही बात आ जाती है कि इंटेंशनली आप पावर प्लेस के अंदर अगर आप देखें तो पावर प्लेस के अंदर वैसे ही आपको बहुत रन आपको पड़ेंगे. वो आखिरी के मतलब अगर आप उस तरीके से चेक करें कि न्यूजीलैंड ने जब वो न्यूजीलैंड 12-15 ओवर्स में पहुंचा हुआ था तो उनके पास इतने रन्स नहीं थे स्कोर हुए हुए. बट व्हेन यू रीच द 20th ओवर एंड जब आप आखिरी का स्कोर चेक करते हो तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. सो यू रियलाइज़ के मतलब 20-20 रन 18-18 रन पड़ना कोई आसान बात हो जाती है उन ओवर्स के अंदर. तो बिकॉज मेरे रूममेट से मेरी ये बात हो रही थी कि इट वोंट क्रॉस 170, इट वोंट क्रॉस 170. सो इट बेयरली क्रॉस 170, इट क्रॉस अराउंड लाइक 172. I think 174 था. 170 something. 173 I guess it was. 172, 173. So yeah, that was that. उनका स्कोर और ऊपर जा सकता था. उनका भी होता है कि लास्ट 2 ओवर्स में मेरे ख्याल से उनको हम जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिया था कंस्ट्रक्ट. Yeah. So if you guys watched the match yesterday, it was Australia versus New Zealand and Australia won the finals. I'm slightly happy because the team who defeated us won the match. हम कह सकते हैं कि अच्छी टीम ने हमारा. तो थोड़ी सी वो तसल्ली हो जाती है. Yeah, but there is a thing that Shahnawaz also said कि you won the toss and you win the game. Yeah. So that's what happened yesterday as well because Australia won the toss. They decided to bowl first and they were easily able to achieve the title for the World Cup. So वही बात आ जाती है. मुझे ऐसा फील होता है कि ड्यू फैक्टर प्लेज a lot more. Yes. और क्या even though if you had achieved 180 runs or 185, they would have easily be able to chase it because if you looked at the entire game, तो they easily क्या कहते हैं conquered the match. And literally no one was having a second thoughts कि New Zealand would have come back or anything and all, but क्योंकि बहुत आराम से Mitchell Marsh took it all the way. David Warner was playing really well, so it played a huge role. But I believe that New Zealand's were really good as well, especially Kane Williamson. If you saw the innings, you did not saw it at all. So the match was really good because he scored around 85 runs at the. I guess 87, 86, 85 to 87. It was around like this, and he took around 60 something balls. Yeah. And it was a great innings because not everyone. तो मैं वही बात कह रहा था ना, जो आखिरी के ओवर्स के अंदर इन लोगों ने इतने सारे रन्स बना लिए थे. इट वाज केन विलियमसन हु वाज प्लेइंग रियली वेल. लाइक पर ओवर के अंदर ही वाज स्कोरिंग अराउंड 2 to 3 बाउंड्रीज एट लीस्ट. सो या, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज Australia who won the match. It was like Australia, like deep down I know कि यार ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, but I was like यार न्यूजीलैंड अगर जीत जाए तो खुशी होगी. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया we know कि वो एक strong team है. Wait, why खुशी क्यों होगी अगर न्यूजीलैंड जीता? I don't know. It was like that कि someone else should take revenge for, is that what? No. वैसे ये मैं बहुत सुन रहा हूँ कि ये रिवेंज वाली बात बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जिसने हमें हराया हम उसको वो हारना चाहिए. I don't think that should happen. It was like कि ऑस्ट्रेलिया बहुत strong team है mentally. वो जब ग्राउंड पे आते हैं ना उनके बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था. इवन जो हमारे साथ उनका मैच हुआ था, लाइक हम थोड़े से घबरा जाते हैं, वो लोग नहीं होते. लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज सो कूल. तो उससे ना हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया विल विन. Even though Hazelwood dropped the catch on Glenn Maxwell's ball, but they did not hesitate on it because you know कि due factor होता है तो ball slip हो जाती है, and it was a easy catch. They kept their cool. They kept their cool and they knew कि even though we drop a few catches or anything and all, we would have covered it in the second innings and we would be able to easily chase it. तो वही बात आ जाती है कि it plays a huge role कि आप किस तरीके से अपनी टीम को पूरा ओवरऑल लेके चलते हैं. सो या मैच देख के तो सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज आई वॉज रियली रूटिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आई न्यू कि वो टॉस जीत जाएंगे तो दे विल ईजीली वन द मैच. बट आई रियली थॉट कि
न्यूजीलैंड आ सकती है थोड़ा बहुत. So it was kind of like that कि आप दिल में थोड़ी दुआ करो कि न्यूजीलैंड जीत जाए but So you were rooting for the to call New Zealand underdog would be an bad statement. Like New Zealand is not an underdog. Yeah, they are not right now. लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड were the underdogs ना. उससे पहले अगर आप कंसिडर करें न्यूजीलैंड never used to come into the finals just like that. मतलब ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, नहीं तो साउथ अफ्रीका आ रही होती थी, इंडिया आ रही होती, पाकिस्तान आ रहा होता था. न्यूजीलैंड वर द टीम जो पाकिस्तान इजीली जिसको बीट कर देता था. वैसे हम लोग ने अभी भी कर दिया था बट ट्रू या so लेकिन just so you know कि these are the two teams that have never won the World Cup, T20 World Cup. Really? Yeah. They never won. Yeah, that's the point. They never won the World Cup, and this was the first time that both the teams who never won the World Cup were in the finals. Yeah. And So then one of them won. Yeah, one of them won, and that's why there was a huge excitement. But I can imagine. we know that they have a huge level of confidence for winning 5 World Cups, Australia. So congratulations. I was so to sad जब जो है ना विलियमसन मिल रहा सारी टीम से. It was so sad. I was like कि यार ये लोग हार गए हैं. तो this was the point कि वो कभी इस तरह सेमीफाइनल्स और इसमें आए नहीं. Yeah. तो it was like खैर यही होता है. Yeah, it's a मतलब one game. has to win and one has to lose. So yeah. So yeah, the match was great, but we got another news that is basically Second news is about COVID. इसमें मैं डॉन खोल के चेक किया है तो उसमें लिखा हुआ कि पाकिस्तान reports less than 300 COVID cases for third straight day, which is a good thing. yeah. बट मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ इसके बारे में क्योंकि अब दोबारा सर्दियाँ आ रही हैं, इंडोर स्पेसेस आ रहे हैं. इंडोर स्पेसेस में हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू करेंगे. तो अफीरा मुझे बता रही थी कि जर्मनी और चाइना में दोबारा लॉकडाउन्स लग रहे हैं कि वहाँ पे तो हमारी यहाँ पे वैक्सीनेशन एज सच 50% भी नहीं हुई भी नहीं पाकिस्तान हुई में. भी जो कहते हैं फुली वैक्सीनेटेड डबल डोज वाले. Yeah. तो आई एम अ लिटिल स्केयर्ड कि थिंग्स आर लुकिंग गुड एट द मोमेंट बट ये वही ना काम बिफोर द स्टॉर्म वाली बात है कि दोबारा फिर एकदम से सर्ज आएगा, फिर दोबारा लॉकडाउन होगा. But Sarmad, have you been noticing that कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने मास्क पहनना बहुत कम कर दिया. हाँ, बिकॉज पीपल हैव बिकम कंप्लेसेंट बिकॉज कम होते गए ना. Yeah. बट ये दोबारा if you're not properly vaccinated Yeah. तो फिर दोबारा It'll सर्च come करेगा back, फिर obviously. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. फिर दोबारा मसला. और फिर It's a chain ना, मतलब एक Cycle होती है, हाँ. साइकिल चल रहा होता है, one goes around and वही बात जर्मनी है. में पूरा लॉकडाउन हो गया. इन चाइना में लाइक आई डोंट रिमेंबर, मुझे अफीरा बता रही थी कि 1300 प्लस या 13,000 प्लस केसेस चाइना के एक रीजन में अच्छा. हो गए. सो लाइक अगर चाइना में ही हो रहा है तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आप देख लें कि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो फिर क्या हो सकता है. Yeah. So vaccinations are really important. Please go get yourself vaccinated. Yeah. Anything else you want to add to the story? वैसे यहाँ पे स्टैट्स बड़े अच्छे शो हो रहे हैं. यहाँ पे डॉन की मैं स्टैट्स चेक कर रहा हूँ और वो सितंबर में चेक कर रहे थे कि नंबर ऑफ केसेस अराउंड 3500 थे और अभी लाइक डेली न्यू केसेस वाले. Yeah. और अब बिल्कुल मिनिमल है, लाइक हंड्रेड्स में है. तो That's a great looks achievement. very well. Let's just keep it that way and get rid of this stupid virus once and for all. Yeah. We have suffered for 2 years. Yeah. Yeah. 2 years, yeah. 2020 में start हुआ था. March, I mean, I think first case was reported in March 2020. Yeah. मार्च से. And it's, Every end में March के yeah, and March it's not में just lockdown that हुआ था कि अभी सिर्फ उस अरसे के अंदर सफ़र किया है. People are still suffering because of the post-COVID symptoms, that is the parosmia. तो you need to look out for that as well. कि you might face some difficulties in क्या कहते हैं sensing of smell And taste. and taste as well. So अच्छा, पड़ोस के मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ because obviously I'm being affected by it. yeah. There have been people इनको 3-3 साल तक चल रहा है because वो शुरू में लाइक उनके यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 2019 के एंड में स्टार्ट हो गया था ना. तो उनके सपोर्ट ग्रुप्स बन गए. Yeah. तो वो 2019 के एंड में जो उनको लगा है उसके बाद वो रिकवर हुआ है. उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, अभी तक वो पड़ोस में से रिकवर नहीं कर पाया. Yeah. सो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग कि भाई कि इसमें लाइक और अब जाके लोग स्टडी करना शुरू कर रहे हैं कि भाई दिस इज अ फिनोमेना. Yeah. तो अभी जाके स्टडी करेंगे तो फिर उस पर ट्रायल होंगे और फिर उसका शायद ट्रीटमेंट आए, शायद ना आए. Yeah. तो या लॉन्ग कोविड, लुक आउट फॉर इट. Yeah, वही बात आ जाती है ना कि when they are first looking at the bigger picture to treating the entire world with the COVID and then they are going to look at for the post-COVID symptoms. So let's hope कि पहले तो ये COVID खत्म होए and then we will
आई होप कि आपको सारे Thank you. खुशियाँ मिले वो वापसी वो खाने की वो सूंघने की टेस्ट आपको मिल जाए. Yeah, because Sarmad has been constantly saying कि मुझे टेस्ट नहीं आता and fries smell like petrol. Yeah. I mean, it's not just fries. Mostly all food items. Smell Actually, almost everything smells like petrol or motor oil. It's like Oh that. my god. Even my perfume. Damn. So you don't wear any perfume anymore? No, I do wear for other people's sake. But I don't. Achha, so very tangent. I have this very perfume that I really like because a coworker used to wear it, and I was like, "Kaun sa perfume?" And then he told me, "I'm like, oh, I'm gonna buy it." I bought it. It was not that expensive. It was a cheap perfume, but it smelled very nice. तो मैं रखा था वो मैंने कहा था कि for occasions like you know कोई parties होंगी या कोई शादियाँ वादियाँ होंगी तो उसमें मैं पहन के जाऊँगा. अब वो स्मेल ही नहीं आते. लाइक यार छिड़को और सिर्फ बाकियों के लिए लगा के चले जाओ, अपने लिए तो कुछ भी नहीं. अब तो फायदा नहीं ना, मेरा तो है ही नहीं. That's the perfume I wear these days. Oh, I just quickly to plug in हमारी the Pakistan Pivot जो podcast है, I think वो second podcast हमारी फैसल सुल्तान साहब के साथ हुई थी. तो उसमें we have discussed COVID. So if you want more information about COVID and how it's affecting Pakistan के cases, go watch that podcast. It's called the Pakistan Pivot. Really nice podcast. Yeah, you should definitely watch it. Yeah. So let's move on to our next topic. That is basically Women's combed out hair are being sold to China. oh So it was like such a gross news. क्योंकि मैं जब भी Why is it gross though? मैं बताती हूँ. Okay. इसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो जब मैं आपको बताऊँगी you'll be like what. तो जब भी मैं पॉलर कटिंग के लिए जाती ना तो लाइक मेरी आंटीज़ वगैरह जो है ना वो कहती थी देखो ये जो तुम्हारे बाल जा रहे हैं ना ये आगे जाके बेचते होंगे. आई वाज लाइक नो, मतलब मुझे इतना अजीब लगता था बिकॉज ये सोचते हुए कि मेरे बाल क्यों बेच रहे हैं. हाँ वो चीज़ है ना. तो अब ये एक पूरा बिजनेस बन चुका है. एंड मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी उसके अंदर ये है कि जो हमारे ब्रश के अंदर वाइल वी आर ब्रशिंग वो वाले जो बाल है ना वो चाइना एक्सपोर्ट किए जाते हैं और वो विग्स में यूज़ होते हैं. सो इट्स लाइक कि जो हमें वैसे कटिंग में मिलते हैं बाल वो भी यूज़ होते हैं लेकिन वो क्योंकि स्ट्रेट नहीं होते तो उस वजह से वो विग्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होते. एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ हेयर कलेक्टर ज़ुबैर अरशद जो कलेक्टर्स है वो 4,000 पर kg वुमेन से लेते हैं जो कि पॉलर्स में और डिफरेंट ऐसी जगह पे काम कर रही हैं. I thought you need because I was once working with this organization जो कि डोनेट करते थे hair for I remember the name of that, Hair to Help. That was a very nice organization. तो basically वो donate करते थे hair to be built. Basically hair was supposed to be made into wigs for people who were going through chemotherapy for cancer. तो उनके लिए था. तो उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट थी कि एक सर्टन लेंथ चाहिए थी, अच्छी खासी लेंथ, आई थिंक 6-7 इंचेस चाहिए थी उनको. तो उसी के वो यूजेबल कर सकते थे. अगर उससे कम है तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. तो आई वॉज नॉट द इम्प्रेशन कि लाइक जो पार्लर्स में हेयर कट होता था उसकी लेंथ बहुत कम होती है बिकॉज इतना ज़्यादा हेयर ड्रास्टिक हेयर कट्स तो नहीं होते होंगे. अगर होते हैं तो वो ओकेजनल होते होंगे. बट अपेरेंटली रिपोर्ट में कह रहे हैं कि वो भी इस्तेमाल होते हैं जो छोटे वो वाले भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन ज़्यादा वो इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे हेयर ब्रश जब हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर तो स्ट्रेट बाल होते हैं ना तो उसको हम यूज़ करते हैं. तो इट्स लाइक जो डीलर वुमेन से लेते हैं वो 4,000 पर kg है और फिर जो कलेक्टर डीलर्स को बेचते हैं वो 7,000 पर kg है और जो डीलर्स क्लियरिंग एजेंट्स का है वो 10,000 और फिर जो चाइना एक्सपोर्ट होता है वो 15,000 पर kg. हाँ obviously सब अपना मार्जिन. सो या वो एक पूरा साइकिल बन के एक पूरा बिजनेस बन चुका है. तो गाइस अपने बाल अगर आप टूट रहे हैं तो अपने संभाल के रखें और उन्हें बेचें. एंड इवन उस रिपोर्ट में ये भी था कि पहले तो हम फेंक देते थे अब वुमेन संभाल के रखते हैं अपने बाल. आई वाज लाइक नो आई वोंट डू दिस. No, but like, is it a bad thing? I mean, yes, I understand कि consent is a thing कि आप inform कर देते हैं कि हमारे जो आपके बाल कट रहे हैं वो probably China जाएंगे to be made into wigs. Do you consent to it? Do you not? पर उसमें भी डिविजन करना बड़ा मुश्किल होगा कैसे कि भाई कुछ वो फ्लोर से उठा रहे होंगे बाल. I don't know. I'm really confused. Like, is it a bad thing? Is it a good thing? Because somebody's making profit out of it. So there's some economic value being generated through an otherwise wasted product, right? Because ये बाल क्या आप फेंक देते हैं लैंडफिल में जाता, अब जाके वो विग्स बन रही है, उससे कोई वैल्यू जनरेशन हो रही है. I don't know. I'm just rambling at this point. मैंने तो बचपन से सिर्फ ये देखा है कि कहते हैं दैट माई मदर कीप्स अ बॉक्स लाइक शी हैज़ अ बॉक्स जिसके अंदर वो उनके जो बाल जितने भी टूटते हैं और निकलते हैं she put them in the box and then after a while she asked me to bury them in the graveyard because उससे आपकी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं. It's kind of like that.
तो उससे बहुत तो मैंने तो सिर्फ ये देखा है, तो अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले उससे, वरना आई कुड हैव बीन अ गुड सेलर ऑफ इट. मैं वही कह रही ना कि मुझे वो चॉइस दी जाए तो आई विल से नो, लाइक मैं फेंक दूंगी, मैं दफन कर मैं नहीं कर सकती है. Okay. So it's the I think personal violation वाली बात आती है. Yeah. You feel violated. Yeah. हाँ, I get और that. मुझे लगता है बहुत से बॉलर्स करते होंगे आगे ये, because they get money out of it. Yeah, obviously economic benefit है उनका, तो मिलते होंगे. अच्छा, weirdly enough, there are two kinds of wigs apparently. I know a lot. I used to play violin, और violin में एक String? जो bow होती है, नहीं string नहीं, bow होती है ना, वो hair material होती है. Okay. तो उस पे रेजन लगता है. एनीवेज, तो वो बनती है घोड़े के पूंछ के बालों से. ठीक है. तो ये इट लाइक हेयर इज अ वेरी ह्यूज कमोडिटी, बिकॉज अपेरेंटली एक सिंथेटिक वाली भी होती थी, लेकिन वो लोग प्रेफर नहीं करते थे, बिकॉज ये जो घोड़े की पूंछ है उसका साउंड डिफरेंट होता था, वो ज़्यादा ऑथेंटिक साउंड होता था. तो ये दिस इज इन विग्स एज वेल, देयर आर टू काइंड्स, देयर आर सिंथेटिक विग्स एंड देन देयर इज रियल हेयर. तो रियल हेयर जो विग होती है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ रियल हेयर. ठीक है. जो सिंथेटिक होते हैं डजंट बिहेव, तो उसको ब्रश नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कर सकते. तो इस वजह से भी जो है ये रियल हेयर वाली जो ट्रेड है वो इट्स बूमिंग राइट नाउ, बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर इट, एंड द सिंथेटिक विग्स आर नॉट मेकिंग एज मच मनी. क्योंकि ऑब्वियसली वो सिंथेटिक है तो थोड़ी फेकनेस तो आती है ना. Yeah. I love my hairs. Let's not put that. So yeah, let's move on to our last topic of the day. That is we wanted to talk about climate change. एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि आज है 15th of November in Islamabad, and the temperatures aren't that bad, like इतने लो नहीं है. Because I remember जब नया सलमान आया था, सलमान तो आज पता चलेगा कराची में सर्दी नहीं होती, इस्लामाबाद में बहुत होती है, और अभी तक हमने हीटर्स भी ऑन नहीं किए. Exactly. तो ये क्लाइमेट चेंज का तो बहुत अफेक्ट है. अब अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि लाहौर की जो एयर क्वालिटी है दैट वाज लिटरली द वर्स्ट इन द वर्ल्ड. एंड जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, इवन माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब स्मॉग की वजह से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं. इवन अभी मरियम भी होके आए थे एंड शी वाज लाइक कि उसको वो जब आई थी तो फ्लू हुआ है एंड ऑल दैट. सो आई डोंट नो कि ऑब्वियसली हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता होगा. आई रिकमेंड, हालांकि दिस इज सच अ सैड थिंग टू डू, आई रिकमेंड एवरीबडी इन लाहौर टू गेट योरसेल्फ एन एयर प्यूरिफायर. घर पे होना चाहिए. They're very expensive. I just looking into it. Yeah, Xiaomi and everything बहुत महंगे हैं, बहुत expensive. And but it's a necessity for people living in Lahore. Yeah. क्योंकि वहाँ की तो बहुत air quality ख़राब हुई हुई है. And not just, अच्छा, this is weird thing that I was looking at. पता नहीं कौन सा रिवर है इन इंडिया, वहाँ पे वो प्रॉपर जो है वहाँ पे रेगुलेशन नहीं हो रही होती है, तो वो कोई वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पे डंप कर रहे हैं. वहाँ पे लिटरली फोम्स बने हुए होते थे ऑन द रिवर. तो इट्स रियली बैड. लाइक पीपल नीड टू, अथॉरिटीज नीड टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड मेक श्योर कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स है वो कम मिनिमाइज हो. बिकॉज एज सच तो we've already seen, especially Pakistan में, I think Pakistan is the 5th most affected क्लाइमेट चेंज की वजह से या कंट्री प्रोजेक्टेड है फॉर क्लाइमेट चेंज. जो वो तो मैं खुद, आप भी देख चुके होंगे, जो 2020 में जो बारिश हुई थी कराची में, कराची वाज इन chaos. तो और अब यहाँ पे इस्लामाबाद में भी फील हो रहा है कि अब इतना बुरा नहीं है कि सर्दी नहीं हुई भी, लेकिन इसके इम्पैक्ट आगे जाके क्या होंगे किसी को नहीं पता. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, आई हर्ड अबाउट अ न्यूज़ कि आर्टिफिशियल रेन शायद लाहौर में करवाएं वो. हाँ, ये मैंने भी कोई देखी थी स्कीम की, बिकॉज स्मॉग इज़ गेटिंग टू मच और बहुत उनके लिए मुश्किल हो रही है. एंड मुझे अफीरा सुबह ही बताई थी कि जो इंडिया में है ना बहुत ज़्यादा क्रॉप बर्निंग होती है और स्मॉग बहुत ज़्यादा उसकी वजह से होती है. तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से हो रहा है प्रॉब्लम. But I have a story to share that has been like in 2019 December. I was basically traveling for the first time, like Pakistan के अंदर मैं अपने शहर से निकल के कहीं बाहर जा रहा था, because I had never traveled in Pakistan or anywhere before. So it was my first time, and I had to stay for like around 3 hours or 4 hours in Lahore. And जो स्मॉग वाली बात और जो एयर क्वालिटी वाली जो बात हो रही है ना, आई लिटरली फेल्ट दैट एज सून एज आई ड्रॉप्ड ओवर देयर, लाइक हाफ एन आवर वाज गॉन. सर्दी के मौसम से जाहिर है, तो वी वर वेयरिंग जैकेट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल, बट आई हैड टू लिटरली कवर माई इंटायर फेस जस्ट टू ब्रीथ प्रॉपरली, बिकॉज बहुत अजीब हालत हो रही थी. आई वॉज गेटिंग स्किन रैश एंड एवरीथिंग एंड ऑल. सो आई वॉज नॉट यूज्ड टू इट, एंड आई वॉज लिटरली praying at that moment कि यार जल्दी ट्रेन आए and I get out of this
city. Yeah. And not that ke Lahore is bad, it's just that the weather was so harsh. December is like the peak. Yeah, that's the point of it. So I felt really really bad at that moment, and I was really hoping कि किसी तरह इसको मैनेज किया जाए सही तरीके से, बिकॉज इफ दिस इज़ अ रेगुलर थिंग दैट पीपल won't be able to literally live their lives properly in Lahore, which is such a huge city for Pakistan. एंड ऑब्वियसली जब आप सही तरह ब्रीथ नहीं कर सकते तो फिर हर चीज़ अफेक्ट होती है. आप बाहर नहीं जा सकते, आप काम नहीं कर सकते, लाइक सब कुछ वो एक सर्कल में, एक चेन में जो सब. इंटरेस्टिंगली इनफ दिस ईयर जो 2020 में कराची के साथ हुआ था ना, वही दिस ईयर हैपेंड टू न्यूयॉर्क. लाइक लिटरली अगर आपने देखा न्यूयॉर्क में बहुत बारिशें हुई थी और फ्लैश फ्लडिंग हुई थी और लिटरली सबवे तो डूबा हुआ था उसका. तो हाँ, दिस वाज आई थिंक 4 months ago. तो उनको भी अच्छे खासे असरात हो रहे, लाइक वेस्ट वालों को भी हो रहा है. और वहाँ पे भी बहुत क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई रेगुलेट योर इंडस्ट्रीज. आई थिंक इफ माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट कि क्लाइमेट चेंज जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस है सबसे ज़्यादा आती हैं फ्रॉम 2 countries. मैक्सिमम कंट्रीज होती हैं वो US और चाइना है. इन 2 कंट्रीज से आती है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज बेसिकली वहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है. तो उनको रेगुलेट करें तो वो पूरी दुनिया को जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उसमें. तो या दे climate change is real. So I have a question. Do you think that the electric vehicles would play a huge role in minimizing the climate change effects? यार that depends. ठीक है, डिपेंड्स ऑन टर्म्स के जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहाँ से जनरेट, वो क्लीन एनर्जी से आ रही है या फिर वो भी अगर फॉसिल फ्यूल बर्न करके आ रही है. बिकॉज आई हैव अ बैकिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज द थिंग इज कि रिसेंटली पाकिस्तान अनाउंस दैट दे हैव रूल्ड आउट लाइक शिपिंग ऑफ विंटेज कार्स, बिकॉज लिटरली विंटेज कार पुरानी होती हैं, सो दे प्रोड्यूस मोर एमिशन एंड एवरीथिंग एंड ऑल. सो दे आर और पाकिस्तान ने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है. दे हैव लाइक आई गेस रिमूव्ड ऑल द ड्यूटीज ऑफ इट. तो एंड दे हैव आल्सो अनाउंस के दे विल ट्राई टू मेक एनर्जी स्टेशंस फॉर द कार्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल. तो दे आर रियली मूविंग टुवर्ड्स क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज वाली फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग एंड ऑल. तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू के हाउ मच विल इट अफेक्ट. यार again back to the previous answer that I gave कि हमारी एनर्जी जो वो है क्या नाम है प्रोडक्शन है वो क्लीन है कि नहीं है. ठीक है, काफ़ी लोगों का एतराज़ होता है कि हमारी एनर्जी प्रोडक्शन क्लीन नहीं है. क्लीन बेसिकली आपकी होती है हाइड्रल, सोलर और न्यूक्लियर. ठीक है, तो मसला ये कि सोलर इज़ नॉट वेरी रिलायबल. उसमें पहले भी आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. हाइड्रल इज़ द क्लीनेस्ट जो कि मोस्ट वायबल है, उस पर करना चाहिए. न्यूक्लियर में थोड़े से और इशूज़ होते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट किस तरह डिस्पोज किया. इस पर अगेन खालिद मंसूर साहब ने भी बहुत बात की है. पहले तो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन लाइक इफ यू गो 5 years 10 years बैक तो वो तो हमारी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती थी. तो अभी तो हमारा फर्स्ट हर्डल इज टू मीट द नीड्स कि भाई पूरा ताकि लोड शेडिंग ना हो, इंडस्ट्रीज चलती रहे. तो पहला तो हमारी नीड है कि इसको मीट करें. मीट करने के बाद होगा ओके नाउ हाउ कैन वी क्लीन दिस. तो हम उसको पहले मीट कर लें तो फिर हम क्लीन की तरफ जाएंगे. सेकेंड इज कि यस इलेक्ट्रिक कार्स डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा इफ़ आर एनर्जी प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो क्लीन. बिकॉज अगर वहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा. वहाँ पे बर्न करें वहाँ पे बर्न, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की जहाँ तक बात आती है, आई सॉ दिस मीम दैट सेड के द इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑफ टेस्ला वाज रनिंग ऑन डीजल का जनरेटर. एंड आई वाज लाइक व्हाट द, मतलब वही बात आ जाती है ना कि इफ इट्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स देन व्हाट इट्स द सेम साइकिल. मतलब कोई फ़ायदा हो नहीं रहा ना उसके. नहीं, वो उसका ये होता है कि जब बड़े प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं कंपेयर टू छोटी गाड़ियाँ में. तो ये एक है. फिर उस पर होता है क्वांटिटी वाइज भी होता है कि गाड़ियाँ कितनी है, डज इट रियली हैव दैट इफेक्ट ऑन climate change as a whole. बहुत वेरिएबल्स हैं. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट. ना ही मेरे पास स्टैट्स खुले हुए हैं यहाँ पे, बट दैट्स माय जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. यू वर सेइंग समथिंग? नहीं. अच्छा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है या उनकी मशीनरी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है? बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन जो मैं बाद में आपसे पूछूंगी. मुझसे क्यों? मतलब so actually I went to Shah Ladita caves yesterday and I was talking to my sister. वहाँ ना केव से पानी आ रहा था. ठीक है, और हम कह रहे थे अगर ये इसी पानी को कहीं पे स्टोर कर लें और इसको इससे एनर्जी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू उसी एरिया में अगर मिल जाए एनर्जी, क्योंकि वो लिटरली वेस्ट हो रहा था. वो एक नेचुरल
जगह से पानी आ रहा है, ठीक है, और वो लिटरली रोड पे सिर्फ बह रहा था और वो ऐसे ही अपनी जगह बनाते हुए नहीं, कहीं उसको चला जाएगा. तो फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है बेसिकली. तो अगर इफ इट्स अ स्मॉल स्ट्रीम तो इट्स नॉट गोना, इट्स गोना पावर लाइक मे बी अ रूम और समथिंग लाइक दैट. तो ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है. पाकिस्तान का मसला ये है जो कि हम इंटरनेशनल फॉर्म्स पे बोलते आ रहे हैं कि हमारा जो पानी का फ्लो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, बिकॉज हमारे जितने भी रिवर्स है वो मोस्टली इंडिया से आ रहे होते हैं. ओके. ठीक है, और इंडिया के बहुत सारे आपके प्लांट्स वहाँ पे बने हुए हैं जो कि हमारी ट्रीटी के हिसाब से वो कहते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहस हो रही होती है वहाँ पे. तो अगर आप चेकें हमारा जो पाकिस्तान के जो वाटर फ्लो है वो कांस्टेंट लाइक एक स्टेबल नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा होता है कभी बहुत कम होता है. सिंध वाले में चले जाएँ तो वो तो चीख रहे होता है. अब इफ़ यू गो टू Sindh, you see the river Indus is like very barren, like खाली होता है वो. कभी कोई बहुत बढ़ जाता है. तो वो अगेन स्टेबिलिटी वाली बात है कि उस पर रिलायंस कितनी कर सकते हैं. अगर स्टेबल है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, बिकॉज पावर प्रोजेक्ट्स इज लाइक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, नहीं इतनी आसानी से नहीं होती. तो उस पर फिर इन्वेस्ट करें, फिर उससे हम डिराइव करें तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा. बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू रिलायंस. जैसे सोलर इज लाइक लीस्ट रिलायंट. तो वाटर पे भी जो है ना रिलायबिलिटी का इश्यूज आते हैं इन टर्म्स के पानी का फ्लो कैसा आ रहा है. ये इश्यूज है. सही. So I guess that's it from today's debrief. We have been adding our social links in the description below. So if you want to follow any of us or you have to have a conversation, you can message us and follow us on Instagram or Twitter. And we have also adding our email address. So if you want to suggest any guests for debrief, feel free to mail us. And I guess that's it. So thank you Sarmad for being on the Thank you podcast. for having me. And thank you Arooj. Thank you. And thank you everyone for watching. We'll see you in the next one. Allah Hafiz. Allah Hafiz.